Good morning, everyone. How are you all? Hope you all are fine. Okay, it's your science class. Take out your science books. Open page number 60. Do you see? It's page number 60, and this is chapter number 6. The previous topic was about matter, material, and their uses. Okay, now your new topic is about energy to do things. You will find this topic on page number 60. Take out page number 60. Okay, very good. So our topic is about energy due to things. Okay, means किन चीज़ों को एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है, ताकि वो काम कर सके. Right now I'm going to start the reading. You're supposed to put the finger on the lines which I'm going to read it for you. Okay, so put the finger on the lines. Come on. Okay, now there are many things around us which are in action. हमारे इर्द गिर्द बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हरकत में होती है, ठीक है. Look at the picture below. Now they give you the picture in the book. They ask you to look at this picture. Okay, look at this picture very carefully. It is full of things in action. If you find there are many things which are in action. Action means like they are doing something, they are moving, or they someone is walking, or someone is, you can say, driving. Okay, so the all things are moving. Okay, so a plane is flying. If you see this plane, so it is flying, so it means it is an action. It is moving, so it is an action. A car and a van are moving along the road. If you see this car and this van, they are moving. See, they are moving on the road means ये चल रहे हैं, ठीक है. देखिए रोड पे गाड़ियाँ चल रही है, हवा में जहाज जो है वो उड़ रहा है, तो it means ये सब क्या है, हरकत में है, ठीक है. A lady is riding a scooter. There is a lady who is driving what? Who is riding a scooter. क्या कर रही है एक लेडी? स्कूटर को राइड कर रही है, तो इट मीन्स ये भी मोशन में है, ठीक है. सो ये सारी चीज़ें क्या हैं, हरकत में है. कम टू द नेक्स्ट लाइन. Fire is keeping a lady warm. If you see this lady, she's taking the fire. So this heat keep her warm. ये भी एक एक्शन है, ठीक है. उसको हीट मिल रही है, वो अपने आप को गर्म कर रही है, तो ये भी क्या है, हरकत है, ठीक है. Someone is listening to music. If you see this man or this boy, he is listening what? Music. तो ये भी एक हरकत है, ठीक है, क्योंकि वो सुन रहा है. सुनना भी क्या है, एक्शन है एक, ठीक है. And sunlight is brightening the view. If you see the sun, why you can see this picture clearly? Because of the sun, ठीक है, क्योंकि सूरज की रोशनी की वजह से ये तस्वीर आपको रोशन, ये पूरा मंजर आपको रोशन नज़र आ रहा है, ठीक है. जैसे दिन का टाइम रोशन होता है, ठीक है, क्यों? बिकॉज सन होता है उस टाइम, और वो सन की रोशनी की वजह से, क्योंकि सनलाइट इज ब्राइटनिंग द व्यू. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पैरा, द लास्ट पैराग्राफ ऑन दिस पेज. None of this is happening without energy. Keep it in your mind. It is very important you to know, okay, that none of this is happening without energy. ये सारी हरकतें जितनी भी हो रही है, ठीक है, इन सब को किस चीज़ की ज़रूरत है, एनर्जी की. किस चीज़ की, एनर्जी की. वेरी गुड. एनर्जी के बगैर, ताकत के बगैर इनमें से कोई चीज़ हरकत नहीं कर सकती. इसलिए एनर्जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. Energy is the power that humans, animals, plants and machine use to do things. एनर्जी ही वो चीज़ है जिसकी वजह से इंसान, जानवर, पौधे और मशीन सब काम करते हैं. इज दैट क्लियर टू यू? किसकी वजह से? एनर्जी की वजह से. नो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स can do anything without energy. No living or non-living things, ठीक है, कोई भी जानदार या बेजान चीज़ एनर्जी के बगैर काम नहीं कर सकती. ये माइंड में रखें, चाहे वो चीज़ जानदार हो कि बेजान हो, हरकत के लिए उसको एनर्जी की ज़रूरत होगी, ठीक है. ये ही आपका आज के लिए टॉपिक है. आपने इसको दोबारा से रीड करना है, ठीक है. जो आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स लगी, आप मीनिंग फाइंड करके लिख सकते हो. आपने फर्स्ट लाइन से लेके लास्ट तक घर में रीडिंग करनी है. थैंक यू सो मच.